start off the section 15 thermal cutting process. Basically, we have 4 thermal cutting process: laser cutting, oxy fuel cutting, which is oxy. That's what we are going to see in this particular chapter. Then we have water jet cutting, and then we have one more process, plasma cutting. So in this SWIP notes, we are only going to take note of 2 cutting process, which is oxy fuel cutting and the plasma. Water jet and laser is not being given to the SWIP readers because these are the very hi-fi and niche cutting processes, which is not yet completely normalized in the industry. Industry only uses these 2 primarily cutting processes, and if you know them, I think. But for the people who are very good, nicely interested about these topics, can go to the YouTube and see more voluminous videos on this. Will be more informative. So oxy-fuel cutting, as the name suggests, uses oxygen as its primarily thing to cut, and you are just burning oxygen there, and then the oxygen will take care of the rest of the cutting process. As you know, the oxygen is gives ample amount of boost to the heat. So that principle is used for cutting with the proper nozzle setup that as you can see here. So let's roll the process now. We can see this photograph of the cutting. I'll just try to make this. Yeah. Oxy-fuel cutting cuts or removes metal by chemical reaction of oxygen with the metal at elevated temperature. Temperature is provided by gas flame, which preheats and brings the material up to burning temperature, approximately 850 degrees that we need. So between 850 degrees to 1000 degrees it is happening, and the steel is getting cut. Once it is achieved, a stream of oxygen is released which rapidly oxidizes most of the metal and performs the actual cutting operation. Metal oxides together with molten metal are expelled from the cut by kinetic energy of the oxygen stream. Moving the torch across the workpiece produces a continuous cutting action. Well, इसको बहुत ही मतलब complicated करके इन्होंने लिखा है, but thing is they are using oxygen at elevated temperature. Elevated temperature पे ये gas flame इसको थोड़ा preheat करने के बाद इसको 800 डिग्रीज 850 डिग्रीज में ये कट करता है, और ये जब ऑक्सीजन आप स्टार्ट करता है तो इसका जो स्ट्रीम है, इसका जो फोर्स है, वो और हीट दोनों मिला के ये एक्शन कट हो जाता है, और ये नोजल आगे मूव होता है क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है. आपने आपका कंपनी में सीएनसी मशीन देखा होगा. सीएनसी मशीन में ड्राइंग का डायमेंशंस फीड करते हैं और बाद में वो नोजल्स को मूव करने के लिए उनका पास सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स रहता है, और वो उसको मूव करके इसको कटिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो ये कंटिन्यूस एक्शन है. एक बार आपने फीड किया तो ये बीच में आपको रुका सकते हैं, बट ये एंड में कट होने के बाद ही ये रुकता है. सो बेसिकली ये प्रोग्रामेबल एक्शन है. पर आपका ये हैंड मूवमेंट से भी, आप हैंड से भी कट कर सकता है. बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का दोनों कटिंग गैस बॉटल अलग से हैंड टॉर्च में लेके, हैंड टॉर्च से भी लोग कट करता है. बहुत सारा फैब्रिकेटर्स, ये रूटीन है, हर एक वर्कशॉप में ये होता है. दिस प्रोसेस इज कंप्यूटराइज्ड एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस. ये आपको मैन्युअली भी कर सकता है, दोनों प्रोसेस में पॉसिबल है. A material must simultaneously fulfill 2 conditions to be cut by oxy-fuel cutting process. Burning temperature must be below parent material melting point, and melting temperature of oxides forms during the cutting process must be below the parent material melting point. So ये इसमें 2 important characteristic है. and जिस material को आप काट रहा है उसका melting point of course आपका जो temperature of burning है उससे हाई होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, ये आपका पूरा मटेरियली मेल्ट हो जाएगा और आपको कट होने के लिए अच्छा से कट नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा रूल है कि मेल्टिंग होने के बाद जो ऑक्साइड्स फॉर्म होता है नीचे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी पेरेंट मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से हाई होना चाहिए, वरना क्या होगा, वो भी मेल्ट होके आपके स्टील में जो ये हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, एंड देन आपका जो स्टील का जो क्वालिटी है वो
चेंज हो सकता है. So this is one of the most important element. और ये तो कॉमन सेंसिकल एलिमेंट है, कोई भी आदमी ऐसा कटिंग नहीं करेगा जिससे पूरा का पूरा प्लेट ही मेल्ट हो जाएगा. So these conditions are fulfilled by carbon steel and some low alloy steel. However, oxides of many of the alloying elements in the steel such as aluminum, chromium have melting points higher than those of iron oxide. So that is one thing you need to consider. These high melting point oxides which are refractory in nature may shield the material in the curve so that fresh iron is not continuously exposed to the cutting oxygen stream. So curve, so fresh iron is not continuously exposed to the cutting, so leading into a decrease of the cutting speed and ultimately unstable process. So जो कट होने के बाद का जो मटेरियल बचता है वो आपके कटिंग प्रोसेस के अंदर नहीं आना चाहिए, वो एक्सपेल होके बाहर गिरना चाहिए, तभी आपका कटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली चल सकता है ऑपरेशन में. So in practice the processor is effectively limited to low alloy steels containing less than 0.25 carbon, less than 5% chromium, less than 5% molybdenum, less than 5% magnesium, less than 9% nickel. So these are the materials which you will have these ease of cutting in this. So let's see advantages and disadvantages of this. Steel can generally be cut faster than most of machining methods. आपने देखा है कि मशीनिंग में लेथ मशीन में कट कर सकता है, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है कटिंग प्रोसेस में, 4 आवर्स 5 आवर्स कभी कभी 8 आवर्स भी लगता है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस. हमने देखा है कि मशीनिंग हम लोग यूजुअली करता है PQR का कटिंग सैंपल बनाने के लिए. सो आपको अगर ऐसा पूरा प्रोजेक्ट का स्टील कट करना पड़ा तो एक तो बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट्स हो जाएगा, वो भी है, दूसरा टाइम इज गोइंग टू बी अनदर किलर. That is why oxy-fuel cutting will be faster and also it is in good quality, and also the temperature because of which the beveled edges, they are not having any microstructural problems. Selection shapes and thickness difficult to produce by mechanical means can be cut economically. So इसमें आप various shapes कट कर सकते हैं. मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कैसा हम लोग ने कटिंग अचीव किया है. ये सब CNC से इजीली आपने कट करके अचीव किया हुआ है. सो बेसिकली इक्विपमेंट कॉस्ट्स आर लो कंपेयर्ड टू मशीन टूल्स. मैनुअल इक्विपमेंट इज वेरी पोर्टेबल, कैन बी यूज्ड ऑन साइट. सो आपने देखा ये बहुत सारा बार हम लोग मैनुअल कटिंग भी यूज करता है साइट में, छोटा छोटा कटिंग वर्क्स के लिए. देन कटिंग डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड रैपिडली ऑन स्मॉल रेडियस. ये बहुत ही छोटा रेडियस से आप कट कर सकता है, provided ये बहुत छोटा रेडियस नहीं हो, but at least you know for the things which we fabricate on site, ये जो हम लोग मैकेनिकल स्टील प्रोडक्ट्स कट करके फैब्रिकेट करते हैं उसके लिए ये रेडियस बहुत ही अच्छा से कट कर सकता है. ये लार्ज प्लेट्स कैन बी कट रैपिडली इन प्लेस by moving the torch rather than the plate. So just you know torch movement से आप बड़ा बड़ा thickness 100 mm 120 mm तक कट कर सकते हैं. It's economical of plate edge preparation. ये plate edge के लिए भी आप अगर 45 डिग्री या 55 डिग्री रख के नोजल को आपने कट किया तो आपका बेवल भी बन जाएगा. So ये another you know it is beauty of this system that आपको ग्राइंडिंग से बेवल बनाना जरूरत नहीं है. आपको ये करने के बाद आप थोड़ा, आपको अगर अच्छा फिनिश चाहिए तो आप ग्राइंडिंग कर सकते हो. तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? नो डाउट कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा. डायमेंशनल टॉलरेंस सिग्निफिकेंटली पुअरर देन मशीन टूल कैपेबिलिटी. सो हमने देखा है मशीन में आपको 0-0 मिल सकता है, इसमें आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा 1-2 mm तक का. सो ये जो जहाँ पे आपको टॉलरेंस एकदम 0-0 चाहिए वो वहाँ पे आपको मशीनिंग ही यूज करना है. बट जनरली इंडस्ट्री में जो फिटअप का जो टॉलरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू वेल्डिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू फैब्रिकेशन, आप हमेशा इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको अगर एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बनाने का है तो 2-2 mm वेल्डिंग का टॉलरेंस लेके आप कट कर सकता है और बाद में ये श्रिंक होगा तो परफेक्टली होगा. और इसको हमेशा वन हैज टू डू इट बाय यू नो ट्रायल एंड एरर. और एक मंझा हुआ CNC कटिंग या शॉप फैब्रिकेशन फोरमैन या सुपरवाइजर या मैनेजर ये जानता है. तो ये जब उसको कटिंग के लिए पूरा ड्राइंग्स मिलता है तो वो और वेल्डिंग इंजीनियर ये डिसाइड करता है कि कितना mm रख के कट करेगा तो कितना डायमेंशनल टॉलरेंस परफेक्ट आएगा. सो दीज आर ऑल दी things which you will learn when you become an inspector and come on site.
So till then you have to understand that the dimensional tolerances of this cutting system is not 000. Process essentially limited to cutting carbon and low alloy steel. So carbon and low alloy steel, of course आजकल तो steel, stainless steel और सब कुछ काटा जा सकता है, but oxyfuels cutting से stainless steel या aluminum वगैरह उसके लिए अलग processes है. Preheat flame and expel red hot slag present fire and burning hazard to plant and personal. So जब मैंने आपको बोला जब कट करता है तो उसमें जो कर्व और ये जो स्लैग्स निकलता है वो नीचे गिरता है, तो आपको नीचे प्रोटेक्शन के लिए कोई प्लेट या ऐसा कुछ होना चाहिए और वो आपका पाँव में गिरना नहीं चाहिए, इसलिए लेग में भी आपको अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए while cutting this. Fuel consumption and oxidation of the metal require proper fume control and adequate ventilation. ये एक ओपन एरिया में करने वाला चीज है. So आपने देखा होगा CNC usually is kept in an open area, so इसका fumes वगैरह ये हो जाता है, expel हो जाता है. Hardenable steels may require pre and post heat adjacent to the cut edges to control their metallurgical structure and mechanical properties. So अब जब higher grade steel cut करते हैं 460, 690, 920, these kind of hard steels, one has to do some preheating around the edges so that their microstructural properties don't change. So ये भी आपको ख्याल रखना है कि आपका जो कटिंग करने का जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये कैसा मैच करता है फ्लेम. Special processes modifications are necessary for cutting high alloy steels and cast irons. Of course, मैं तो जाने वाला भी नहीं हूँ cast iron में. There is a lot of complication in cutting cast irons and high alloy steels. So normally we'll just speak about these normal standard stainless carbon steels like SA516 grade 70 हो गया pressure vessel के लिए, S355J grades हो गया. Yeah, normal grades which we encounter in API, API fiber हो गया, ये pipes वगैरह जो कट करता है. Normally हम लोग देखते हैं कि most of the industry में almost 80% 90% यही type of material रहता है कट करने के लिए. So being a thermal process, expansion and shrinkage of the component during and after cutting must be taken into account. This is what we discussed about this a bit earlier, that you have to take care of the shrinkage and expansions. So let's see the requirement of gases. Oxygen for cutting operation should be 99.5% half higher purity, क्योंकि आप imagine कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन में मॉइस्चर या ये सब रहेगा एलिमेंट तो आपके कटिंग के साथ वो प्ले करेगा और बाद में आपको कटिंग एज इतना शार्प और इतना ब्यूटीफुल नहीं मिलेगा. So when your high quality jobs are there, कोई भी नहीं चाहता है कि एक बेवल के बीच में कोई कटिंग ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और फिर आपको उसको बाय वेल्डिंग और लेट्स से बटरिंग से पूरा करना पड़ेगा. So the quality of cut should be good. So your oxygen percentage needs to be very high. So inspector needs to check the quality of gas certificate when it comes from the gas company wherever they are buying it from. Lower will result will decrease in cutting speed and increase in consumption of cutting oxygen, thus reducing the efficiency of the operation. With purity below 95%, cutting becomes a melt and wash action and usually is unacceptable. So आप देख सकते हैं between 99.5 to 95, just because of 4.5% drop, you may have a problem in our cutting system. Also, your cutting system will be slow, so the productivity will be affected. So just insist on a very high purity oxygen. Don't see the price of that oxygen, which is 97, 98 or 96%, because ultimately it is going to affect your cutting process. Preheat flame has following functions in the cutting operation: raises the temperature of steel to the ignition point, adds heat energy to the work to maintain the cutting reaction, provides a protective shield between the cutting oxygen stream and the atmosphere, dislodges from upper surface of the steel any rust, scale, paint or any foreign substance that would prevent or stop or retard the normal forward process of cutting action. So preheat के सब फायदे हैं. So factors to be considered when selecting fuel gas: preheat time, कितना preheat time आपको चाहिए, effect on cutting speed and productivity, cost and availability. So बाजार में कौन सा गैस अवेलेबल है आपको ये स्टडी करना पड़ेगा किसका कॉस्ट कितना है,
एंड आपको कितना फास्ट कट करना है, स्लो कट करना है, आपको क्या काइंड ऑफ जॉब है, थिकनेस कितना है, ये सब मैटर करता है इसमें. सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल गैस टू ऑब्टेन अ न्यूट्रल फ्लेम. Safety and transporting and handling, that is obviously important. Some of the more common fuel gas used are acetylene. मैंने आपको बोला ऑक्सी एसिटिलीन भी हम लोग यूज करता है. सो एक सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है, दूसरा सिलेंडर में एसिटिलीन रहता है, और फिर वो दोनों केबल से, वो होज से आता है और वो कटिंग टॉर्च में लग के आपको कटिंग कर सकता है. तो फिर आपको ऑक्सीजन और एसिटिलीन का परसेंटेज भी मिक्स कर सकता है वो टॉर्च में, फ्लो एडजस्ट करके आप कट कर सकते हैं. सो इन दिस वी हैव सीन दैट दिस होस को हम लोग बार बार टेस्ट करना चाहिए. एवरी इट इज इट हमारे यहाँ पे तो मैंडेटरी है कि 15 डेज में एक बार होस का टेस्ट होता है वाटर एंड बबल टेस्ट से. सो दैट होस अगर लीक होगा आपका तो आपका बहुत सारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए होस टेस्ट करते रहना चाहिए. ये सेफ्टी पैरामीटर भी है. तो आपका आर्क ब्लो एंड ऑल यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट. सो नेचुरल गैस भी मिलता है बहुत जगह पे. मीथेन मिलता है, प्रोपेन मिलता है, प्रोपिलीन और मिथाइल एसिटिलीन भी मिलता है. सो इट डिपेंड्स. अब आप गुजरात में है तो आपको बहुत सारा गैस का अवेलेबिलिटी, सूटेबिलिटी इजीली मिलेगा. अगर हम लोग मिडिल ईस्ट में है तो यहाँ पे भी कुछ गैसेस है जो एक्सपेंसिव है, कुछ है जो not expensive. So it depends where you really are. You have to think about your cutting process. Usually ये इंस्पेक्टर के जिम्मेदारी में नहीं आता है. इंस्पेक्टर को जस्ट मालूम होना चाहिए, बिकॉज जब ये कंपनी सेटअप करता रहता है तभी ये सब डिसाइड करता है बाय इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट along with welding engineer and everybody. Fuel gas characteristics and applications. So you've seen this is a table in which you can see acetylene is used, propane, MAPP, propylene and methane. And you have seen the main characteristics of that. So acetylene is mostly highly focused, high temperature flame, rapid preheating and piercing, low oxygen requirement. So ये बहुत ही यूज किया जाता है इंडस्ट्री में acetylene. Cutting of thin plates, bevel cuts, short multiple pierce cuts, यूजुअली अप टू 60-70 mm आप एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन से काट सकता है. प्रोपेन यूजुअली हम लोग प्रोपेन प्रीहीट के लिए यूज करता है, कटिंग के लिए बहुत ही कम, बिकॉज प्रोपेन वैसे भी एक्सपेंसिव है. सो लो टेम्परेचर फ्लेम, हाई हीट कंटेंट, स्लो प्रीहीटिंग एंड पियर्सिंग, हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सो कटिंग ऑफ thicker sections, 100 to 300 mm long cuts you can get with this. Although I have not tried propane cutting, well, it's available in the system. MAPP is medium temperature flame, cutting underwater. If you want to cut underwater, then you will use this. Obviously, I have not seen underwater cutting at all, because it's only done in the offshore where there is a salvage operation, or either there is something which after installation of jackets or topsides, they have to do some underwater work. So these are very specialized items. So propylene, medium temperature flame, cutting of thicker sections you can do by propylene. Methane, low temperature flame, cutting of thicker sections, also thicker sections you can. So, but usually acetylene for thin to medium thin cuts you can use. Let's see some stainless steel cutting video is done by laser cutting. Usually stainless steel can be cut by these flame cuttings, but if you're going to use that for welding and all that, then the temperature will be very high. It will sensitize already the stainless steel. So you must be very aware of it, that stainless steel can be cut properly. Then you need to either cut it by cold cutting, or you can cut it by the laser cutting or other cutting mechanisms, and avoid heat altogether. Generally, oxyfuel cutting is characterized by large curve, more than 2 mm. Then low roughness value, because the roughness is very important, because after that you are going to do grinding, but then ideally you need a very good cut edge. So the roughness value will be there. So poor edge squareness. So squareness will be also not good. So you will have to do grinding and make it proper. Then wide HZ.
So heat affected zone will be more than 1 mm, it will be there, no doubt. And that 1 mm you need to remove by grinding. There is no other way to remove that. So cutting quality, the face of satisfactory cut has a sharp top edge, drag lines which are fine and even, little oxide and sharp bottom edge. Underside is free of slag. It should be like that. You can see underside is slag. Later on, this can be removed by grinding, but you need to spend a lot of time for doing that. Satisfactory cut is shown in the center of the center, here in the center. The cut is too slow, left, and the top edge is melted. And there are deep grooves in the lower portion of the face. Scaling is heavy. The bottom edge may be rough and adherent to dross. Dross and all that thing, curve, are the things which are produced after cutting. That is the molten metal. Those are the slag and all that in the cutting process. So if the cut is too fast and appearance is similar with an irregular cut edge, plate thickness 12 mm. Effect of excessive travel speed. So with a very fast travel speed, the drag lines are coarse and at angle to the surface, and the excessive amount of slag sticking to the bottom edge of the plate due to the oxygen jet trailing with insufficient oxygen reaching the bottom of the cut. So क्या होगा अगर आप इतना जल्दी फास्ट मूव करेगा तो ऑक्सीजन को नीचे तक जाने के लिए वक्त नहीं मिलेगा और बाद में वो कट बराबर से नहीं होगा. आपको फिर दोबारा से उसको पास करना पड़ेगा लोअर पोर्शन कट करने के लिए. और ये जो अगर पहुंच भी गया ऑक्सीजन लोएस्ट पोर्शन तक तो उसका कट इतना अच्छा या क्लीन नहीं होगा. Satisfactory cut is shown in the center if the preheat flame is too low. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं. And it's most of अगर it's too fast ये आप राइट साइड में देख सकते हैं. So if the preheating flame is too high, right, the top edge is melted. ये आपका बहुत ज़्यादा melt हो गया. The cut is irregular and there is an excess adherence of dross. ये सब adherence है dross. Plate thickness is 12 mm. यहाँ पे देखते हैं. Satisfactory cut is shown in the center. आप लेफ्ट देख सकते हैं और राइट देख सकते हैं. If the blowpipe nozzle is too high above the work, excessive melt of the top edge occurs with much oxide in the top. If the torch speed is irregular, right में आप देख सकते हैं कि अगर आपका torch का speed irregular है तो uneven spacing of the drag lines can be observed together with a irregular bottom surface and adherence oxide. The plate is used is 12 mm. So आप देख सकते हैं too high रहेगा तो ये नीचे में आपका ये भजिया जैसा बन गया है. और अगर आपको टू लो रखेंगे तो ऊपर साइड में ज़्यादा गर्म होके प्रॉब्लम हो जाएगा आपका. तो ये by your you have to do sample cuttings and you need to properly approve the process. So cut करके thickest section आपको cut करके इसको properly approve करके रखना पड़ेगा ये process को. So plasma arc cutting uses a constricted arc which removes the molten metal with high velocity jet of ionizing gas issuing from constricted orifice. So इसका जो cutting nozzle है ये specially designed है with an orifice. A pilot arc is struck between the tungsten electrode and the water cooled nozzle. The arc is then transferred to the workpiece, thus being constricted by the orifice. Downstream of the electrode, as plasma gas passes through this arc, it is heated rapidly to a high temperature, expands and accelerates as it passes through the constricting orifice towards the workpiece. Orifice directs the superheated plasma stream from the electrode towards the workpiece. Then the arc melts the workpiece. High velocity jet blows away the molten metal. The arc cutting attaches or transfers to the workpiece known as transferred arc method. When material are non-electrical conductors, there is a method known as non-transfer arc, where positive and negative poles are inside the torch body, creating an arc, and plasma jet stream travels towards the workpiece. So this process is designed like a welding machine, arc
that arc generated by this orifice then cuts the workpiece very finely. आप देखिएगा तो वेल्डिंग से भी आपको मटेरियल कट कर सकता है SMAW इलेक्ट्रोड से, बट वो क्या है, वो प्रोसेस क्लीन नहीं है, वो प्रोसेस में आपको स्ट्रेट एजेस वगैरह नहीं मिलेगा. अगर आपको वही प्रोसेस को मैकेनाइज करना है तो एक ओरिफाइस से प्रॉपर प्लाज्मा जेट से आप आर्क क्रिएट करके कट कर सकता है, तो प्लाज्मा आर्क कटिंग उसी को बोलता है. So usually in plasma arc, argon gas is used, argon gas with a mixture of hydrogen. So a mixture of argon hydrogen is often used to cover when you are cutting thicker sections of stainless steel or aluminum. Some people use mixture of hydrogen and nitrogen or methane and nitrogen when cutting thinner sections of stainless steel. So you can see that for plasma you can use those kind of gases. So in general, air is the best secondary gas when using nitrogen plasma. Carbon dioxide also works well, slightly improving the finish, cutting speed and part life over the use of air, but CO2 costs more than air and while requires multiple manifold of gas cylinders. तो आपको प्लाज्मा गैस कट करने के लिए मैं आपको एक just want to show you some. You can see that cutting for plasma gas, you can use compressed air, and compressed air is good quality cut and economical cut in mild steel, and in stainless steel good quality cut, speed and economical. Aluminum good quality cut and speed is also economical. So oxygen if you use along with shielding gas as air, then excellent quality cut you will do. But oxygen that is not recommended for SS and stainless steel and aluminum. Nitrogen and carbon dioxide you can use. So that is giving a fair amount of cut and is also very good for stainless steel aluminum. For nitrogen and carbon dioxide you can use. So we can use many combinations in this: nitrogen, carbon dioxide, nitrogen air, nitrogen water. So for water cutting, then argon, hydrogen and nitrogen. Not recommended for mild steel, but then it is good for the aluminum and stainless steel. So as you know that depending on your thickness, depending on your type of material that you're cutting, the gases are usually used. So this kind of information is important to QC inspector must be knowing all this. So advantages of plasma cutting is not limited to material, which is electrical conductor. So widely used for cutting all type of SS, non-ferrous material and non-electrical conductive materials. Operates at much higher energy level compared with oxy-fuel cutting, results in faster cutting speeds. Instant startup is particularly advantageous for interrupted cutting as it is allows cutting without preheat. So आपको preheat देने जरूरी नहीं है. So there are disadvantages also, like the dross formation. Let's see that. Dimensional tolerance significantly poorer than machine tool capabilities. This is obviously same for both plasma and oxy-fuel. Introduces hazards such as fire, electric shock due to high open circuit voltage and intense light, fumes, gases, noise level may not be present with other process. However, in underwater cutting, the level of fumes, underwater radiation and noise are reduced to low level. So आपको ये पानी के नीचे भी कट कर सकता है. For example, आपको एक वाटर बाथ बना सकता है. वाटर बाथ बना के आपको स्टील को उसमें डुबा के कट कर सकता है. तो ये प्रोसेस से आपको थोड़ा गैस फ्यूम्स वगैरह कम लगेगा. Compared with oxy-fuel cutting, plasma cutting equipment tends to be more expensive, requires fairly large amount of electric power. So आपको अगर electric power expensive है,
आप अगर गैस जनरेटर से आप कटिंग कर रहा है तो नेचुरली आपको ये अवॉइड करना चाहिए. Being a thermal process, expansion and shrinkage of the components during and after cutting must be taken into consideration. So ये आपको इसका dimensional tolerances ये सब सोचना मांगता है. Cut edges slightly tapered होगा तो इसको आपको वापस ग्राइंड करके कट करना पड़ेगा. फिर देखते हैं आर्क एयर गाउजिंग क्या है. आर्क एयर गाउजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यूजुअली देखते हैं कि जब हम लोग का रिपेयर आता है माइल्ड स्टील कार्बन स्टील में तो रिपेयर को हम लोग पहले अगर थिकनेस ज्यादा होगा तो गाउजिंग करवाता है वेल्डर से. So during arc air gouging, the metal to be gouged out or cut is melted with the electric arc and blown away by the high velocity of compressed air. So आप देखते हैं कि ये जो arc air gouging का मैं एक वीडियो डालेगा उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो आर्क एयर के लिए एक इलेक्ट्रोड या उसका रॉड होता है अलग से, वो कॉपर फिनिश दिखने वाला. तो वो इसका जो होल्डर है उसमें कंप्रेस्ड गैस कंप्रेस्ड एयर हाई वेलोसिटी पे छोड़ता है और ये इसमें इलेक्ट्रिक आर्क भी इलेक्ट्रोड जैसा ही लगता है. तो फिर वो हवा से ये आप और हाई करंट से आप आर्क मेल्ट करके इसको निकाल सकता है. तो और इसका आवाज बहुत आता है. इसका आप देखा रहेगा जहाँ पे भी गाउजिंग हो रहा है वो ईयर्स को पूरा मतलब आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को. Special torch directs the compressed air stream along the electrode and underneath it. The torch is connected to an arc welding machine and compressed air line, which delivers approximately 100 psi or compressed air. Since pressure is not critical, a regulator is not necessary. Electrode is made up of graphite and copper coated to increase the current pickup and operating life. So आपको याद रखना चाहिए कि ग्राफाइट इसमें है तो आर्क एयर गाउजिंग करने के बाद अच्छा से ग्राइंडिंग करना चाहिए. सिर्फ गाउजिंग करके आप वेल्डिंग करेगा तो आपका कार्बन पिकअप होने का चांस है और बाद में हो सकता है कि आपको क्रैक मिले. Electrode is made up of graphite, copper coated to increase the current pickup and operating life. The process is usually used for gouging and beveling. Besides able to produce U and J, preparation can also be applied on both ferrous and non-ferrous material. गाउजिंग प्रोसेस का ये आपने देखा ड्राइंग है ये. फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो एडवांटेज अप्रोक्सीमेटली 5 times फास्टर देन चिपिंग. आप ये ग्राइंडिंग वगैरह कटिंग वगैरह करेगा उससे अच्छा ये गाउजिंग बहुत फास्ट है. Easily controllable, removes defects with precise as they are clearly visible. May not be followed with ease. The depth of cut is easily regulated and slag does not hamper the cutting action. तो कटिंग करना इसलिए आसान है बट मैंने बहुत वेल्डर्स को देखा है कि वो गाउजिंग करना नहीं चाहता है. तो आई डोंट नो कि उनका क्या रीजन है, उनको क्या लगता है कि गाउजिंग करने से क्या होगा. आपको गाउजर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी वेल्डर प्रोजेक्ट में. आपके पास 200 या 300 वेल्डर होगा बमुश्किल 3 उसमें से 4 या 5 ही लोग गाउजिंग के लिए रेडी होता है. तो गाउजिंग प्रोसेस बहुत ही आवाज करने वाला ऐसा प्रोसेस है तो सबको ये पसंद नहीं आता है गाउजिंग. लो इक्विपमेंट, नो कॉस्ट, नो गैस सिलेंडर और रेगुलेटर नेसेसरी एक्सेप्ट ऑन साइट. इकोनॉमिकल टू ऑपरेट, हैज नो ऑक्सीजन और फ्यूल गैस रिक्वायर्ड. द वेल्डर में ऑल्सो डू गाउजिंग. नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑपरेशन क्योंकि ये बहुत ही ईजी समझा जाता है. Easy to operate as equipment is similar to SMAW, MMW welding machine except torch air supply. Compact with the torch, not much larger than MMW holder. ये आपको सब वीडियो में मैं दिखाऊंगा. Disadvantages: other cutting processes usually produce better and quick cut. Requires larger volume of compressed air. Actually ये प्रोसेस बहुत सस्ता है इसलिए ज़्यादा यूज करता है और इसको easily आप साइट पे कहीं पे भी कटिंग कर सकता है. नहीं तो आपको है ना ग्राइंडिंग व्हील से भी कट कर सकता है पर आपको अगर उससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए गाउजिंग एकदम क्लीन आपको गाउज करके देगा. इंक्रीज कार्बन कंटेंट लीडिंग टू इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ द कास्ट आयरन एंड हार्डनेबल मटेरियल. सो ये आपको कंसिडर करना चाहिए. इन स्टेनलेस स्टील इट कैन लीड टू कार्बाइड प्रेसिपिटेशन सेंसिटाइजेशन. इसलिए ये एसएस में यूज नहीं करता है. एसएस में हम लोग स्ट्रिक्टली बोलता है कट करने का बाय ग्राइंडर ओनली. सो इंट्रोड्यूसेस हैजार्ड सच एज फायर,
स्पार्क्स ये since इसमें फ्यूम्स आता है, नॉइज आता है, इंटेंस लाइट आता है, तो ये थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना जरूरी है. Next, let's see manual metal arc gouging. Arc is formed between the tip of the electrode and our required workpiece, and special purpose electrode which with thick flux coating to generate a strong arc, force and gas stream. Unlike MMAW welding where a stable weld pool must be maintained, this process forces the molten metal away from the arc zone to leave a clean surface. The gouging process is characterized by a large amount of gas generated to eject the molten metal. However, because of arc gas stream is not as powerful as oxygen, a gas or separate air jet, surface of the gouge is not much smooth. And oxy-fuel and air carbon arc gouging से आपको ये मैनुअल मेटल आर्क gouging इतना स्मूथ और अच्छा प्रोसेस नहीं है. इसका ये ड्राइंग है. तो इसमें डीसी नेगेटिव प्रेफर्ड रहता है, बट एसी कांस्टेंट करंट पावर सोर्स भी यूज किया जा सकता है. MMAW gouging is used for localized gouging operation, removal of defects. For example, where it is more convenient to switch from welding to gouging electrode rather than use specialized equipment. Compared with alternative gouging process, metal remove rates are low and quality of the gouged surface is inferior. When correctly applied, MMAW gouging can produce relatively clean gouged surface. For general applications, welding can be carried out without need of to dress or grind. However, when gouging stainless steel, thin layer of high carbon content material will be produced, it should be removed by grinding. कोई भी आपको gouging करने के लिए बोलेगा नहीं SS में, क्योंकि SS में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का फिर या आपको ये कार्बन पिकअप होने का चांस है. स्टेनलेस स्टील का भी पूरा फायदा ही निकल जाएगा, इसलिए यूजुअली स्टेनलेस स्टील को हम लोग कट ग्राइंड करके ही निकालता है. So with this, we have finished the thermal cutting chapter. So let's meet in another chapter, which is welding consumables.